Welcome you all to this 14th day of workshop on Satyarth Prakash. Today we are having as usual two speakers, Acharya Vishnu Mitra Vedarthi from Bijnor and Dr. Anand Kumar Sharma. But one of our speaker, Acharya Vishnu Mitra Vidyarthi, he is not available. He is ill and in the hospital. So uh, we would start with our second speaker, Professor Anand Kumar Sharma ji. And I invite Pandita Usha Devi Prasad from South Africa to introduce our today's speaker, Anand Kumar Sharma ji, and invite him for the talk. Pandita Usha Devi Prasad ji. Prem Namaste to one and all of you. It is my pleasure to introduce Professor Anand Kumar Sharma. Professor Anand Kumar Sharma has his education and training in accounting and finance from the Delhi School of Economics and Manchester Business School, UK. After serving for 6 years as at the top ranked commerce college, namely Sri Ram College of Commerce, Delhi University, he changed the gear to try his career in the Indian civil service. In the first attempt, without any extra effort in terms of seeking coaching, etc., he made it into the Indian Railways Account Service, IRAS, and continued to serve the Indian Railways for 30 years, ranging from the field job at the Rajkot division, the division of Rishi Dayanand's native place, Tankara, and then moving to the Ministry of Railway Board via Mumbai, headquarters of Western Railways, where he was a member of the first Arya Samaj in the world, set up by Maharishi Dayanand Saraswati and the Arya Samaj Kakandwadi, Mumbai. He was a teacher and trainer at Railway Staff College, the apex training institution for the Indian Railway officers, National Institute of Finance Management, Indian Institute of Management, Bangalore, IIMB, and Management Development Institute. He was a consultant to the government of Bhutan and the government of India on public procurement. He has visited the USA, Canada, UK, France, Italy, Thailand, Singapore, Malaysia, Turkey, and several other countries on official visit. The government of Japan has invited him to visit Shinkansen high-speed bullet train system and infrastructure when he was serving as professor at IIMB. He developed a management development program on Info Yoga. He was instrumental in arranging the 50% concession to the second class railway fare to the Arya Jans attending the Arya Mahasammelans held in Mumbai and Delhi. He has developed a 3-year credit course on Indian philosophy for leadership excellence and delivered this course to public policy and management program in 2017. The content is largely based on Vedic scriptures. He was invited by Graduate School of Business, Stanford University, as visiting scholar in 2008 and by Global Project Center, Stanford University in 2013. He also completed his master's in Sanskrit as a regular student from Delhi University in first class in the year 2019. Last year, Srimati Jini Devi Arya Ratna Pandit Rateram Sharma
International Satyarth Prakash Competition 2020 was held jointly by Veda Gurukulam, Kerala, and Arya Samaj Sector 11, Dwarka, New Delhi, where Dr. Sharma, serving as Senior Vice President of this Arya Samaj, contributed in the successful conduct for the first ever Satyarth Prakash competition held in 16 languages in 14 countries of 6 continents. Governor of Sikkim, His Excellency Sri Ganga Prasad Ji, gave away the prizes online. I now present to you Professor Anand Kumar Sharma to address you. Thank you. ॐ मित्रादभयम् अमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् नक्तम् अभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु ॐ सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहाया परमे व्योमन् सो अश्नुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चितेति. With the prayer, with mantra from Veda, and the letter is from Taittiriya Upanishad, which is also translated by Maharishi Dayanand in Navam Sammulas. It reads like this: जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होके उस विपश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है, यही मुक्ति कहलाती है। So thank you, Madam Usha Devi Prasad, for kind words of introduction. I want to inform this audience regarding Mr. Vedarthi, who was supposed to take this session, and I am substitute in place of him. He is a very learned person, and I had a telephonic conversation to find out about his health. So he was hospitalized, and now he has moved to home. There was, some clotting of blood, but all the investigation suggests that there is no damage to any organ. And so it's a good news. He is recovering, and he is on a 1-month medication program. It's suggested by the doctors. Having shared that information, I want to thank the chair for giving me this opportunity, not only for giving this opportunity, but also giving me the flexibility. And the flexibility is like this, that he gave me the flexibility of choosing the chapter of Satyarth Prakash, which is, I gave my choice for the most favorite one. He has also given me a choice that today I can speak either in Hindi or English or in a mixed version. Now, I think most of the Arya Samaj people, they are familiar with Hindi. But when I talk to the people from Trinidad, I think Indrani Behan, Pandita Indrani is there, or some people of Trinidad, they have particularly problem in listening in Hindi. Is there anybody from Trinidad or any place where there is a difficulty in comprehending in Hindi? Then I will avoid. Otherwise, I will go in Hindi as well as English. I think there's Dr. Sab, can I proceed? Okay. Can I proceed in Hindi as well as English, or? Yes. Okay. Yes. So thank you for that. डॉक्टर आर्य साहब का एक बार और धन्यवाद करूंगा
क्योंकि उन्होंने काफ़ी डाइवर्सिटी रखी है, डाइवर्सिटी इन स्पीकर्स, इस तरह से कि वो लोकल एंड ग्लोबल, कुछ लोग हिंदुस्तान से, भारत से हैं, कुछ लोग दुनिया के दूसरे भागों से। जेंडर की इक्वलिटी भी उन्होंने इंश्योर की है, कुछ फीमेल है कुछ मेल है। उसके अलावा एक और इन्होंने बैलेंस किया है कि कुछ लोग स्कॉलर्स हैं और कुछ लोग मेरे जैसे नौसिखिए भी हैं। सो आई थैंक फॉर गिविंग दैट डाइवर्सिटी एंड I think I'm grateful to Almighty God that He is here in the chair. And it was just Gita Jayanti last year, which was, I distinctly remember, 25th of October 2020. The university MDU had invited me to deliver a talk on Gita Jayanti. पर मैं भारत में नहीं था और अमेरिका में कैलिफोर्निया का टाइम सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने एक बार मना किया। फिर ये हुआ कि मैं अपना एड्रेस जो है रिकॉर्ड करके भेजूं, तो वो मैंने वहाँ से भेजा था। और उसमें ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मुझे इनवाइट किया था, बट द ऑडियंस वाज वाइस चांसलर, ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड द फैकल्टीज एंड आल्सो द स्टूडेंट्स व्हिच वर वर्चुअली कनेक्टेड। तो उसमें मैंने एक विश व्यक्त की थी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को महर्षि दयानंद के जो कार्य हैं, सत्यार्थ प्रकाश और उनके जो भी क्लासिकल वर्क हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए और उसको प्रोपेगेट करना चाहिए। तो इट वाज माय विश एंड देन आई फाइंड डॉक्टर आर्य इन द चेयर। सो आई थिंक गॉड इज वेरी काइंड and he is very worthy, competent, energetic and very enthusiastic leader, and I think most competent person to man this chair. So we are very fortunate and we are looking forward for many events of having global impact and perhaps a new direction to the prachar and propagation of the ideas and ideals of Maharishi Dayanand Saraswati. Having said that, I come to the topic of the day. And this topic is, as I told you, it's very dear, very close to my heart. Having born in Arya Samaj family, Satyarth Prakash was with me from, I think, maybe 8th standard or so. And when I moved for my studies in Delhi, I was regular visitor to the Arya Samaj satsangs, and so my swadhyay of Satyarth Prakash continued till date. I don't know how many times I have gone through that, but I'm still a learner, and many more things I discuss with the scholars which arise out of the reading of this chapter. I think Acharya Brahmadev is here, and when he was on day one talking, I had posted a question in the chat box. And question was that what is the best part, and how we can internationalize, how we can bring Satyarth Prakash at the center stage globally. He gave me the answer, and I got it weighted by some of the scholars from Arya Samaj. He mentioned that this is like a moksha shastra. And I checked it with two scholars, I think one from Roger, Satyajit ji. I asked him what are the yogs, mokshastras, and he mentioned about darshans, Upanishad, Ved. And then I asked, what about Satyarth Prakash? He said, yes, Satyarth Prakash can be classified as mokshastra. Another scholar, Sri Ved Prakash Strutri, I talked to him and say, can we term it as a mokshastra? He said, yes, it can be. So this is what is that it is a shastra which can be taken forward to bring Arya Samaj at the center stage globally, because in today's world, the need is of propagation of the ideas, maybe differently packaged, more attractively, and then present it in a very effective manner.
I want to draw your attention that the world is having a lot of problem in the not only the current epidemic, but there is a research done by databridgemarketresearch.com. If anybody wants to access, one can do that. Now, I asked one of my students to find out how big is the meditation market. And this is very interesting. The research shows that it is a huge market, and the projection is that from now to 2027, it will be 9 billion US dollars. And the rate of growth per annum, that is the CAGR, is 10.4%. And it was very, very interesting thing to note that this is based on product meditation market. It is segmented into meditation program, yoga centers, apps, websites, books, online courses, and workshops. And on the basis of disorders, the meditation market is segmented into mood disorders and anxiety disorders. On the basis of type, the meditation market is segmented into focused attention, open monitoring, and self-transcending meditation. On the basis of meditation type, the meditation market is bifurcated into sophrology, Kundalini Yoga, and mindful fitness surges. Meditation market has also been segmented based on the information sources into books, newspapers, internet, DVDs, and articles. And it further says it has made level analysis country-wise, continent-wise. So North America dominates the meditation market due to the high prevalence of mental disorders and flourishing yoga centers and meditation programs. So this is just a brief summary of this report, and you can go into the details. Now, the disorders are increasing, and I was just Googling. Every, I think, second, third person is having some problem of depression. So there is a huge opportunity for us if you look from this point of view. Now, I may be sounding that like a professor of finance and marketing, but there's a very important lesson for us. When we set up an Arya Samaj, our Arya Samaj unit is an expense center, not a revenue center. When other people open and start a mandir, it is a revenue center, not an expense center. Now, we have to have some source of financing our activities if you are thinking at a large scale. And perhaps this may be one area where we can make our activities self-sustaining, and we can have a source of revenue tied up with our program. So this was one, and this the marketing people have a very interesting slogan. They say attract, connect, and magnify. So you have to attract the people. You have not to sell just that I have a product and it's so good, it has distinct features. No, you have to attract them, get connected, and then sell your product, magnify whatever you want to say. So perhaps we have to think in these terms that this is a theme by which we can attract people, connect people, and then we can sell them our product. So, if again I take to the recourse to the basic economics, and there are three problems which every economy faces. That is what to produce, how to produce, and for whom to produce. If we decide that this is our product, then we have to also decide how
that is the modalities, technology, and for whom. Now this is a great market. Almost whole of the world is the market. The world population now is 7.9 billion. Now I interact with the young people in US. So, and I talk for half an hour in summer camp on Vedic Gyan. So I was just mentioning that, the world population is 7 billion. So one child says, no, it is not. And I say, no, it may be fine. It is, you can check from Google. So there's a world meter which says it is 7.9 and increasing every second. So if you take out 0.9 billion out, whether they are, too small for yoga, but I find in US schools now the kids are given training in mindfulness. That of course they are influenced more by Buddhist practices, but that's now accepted practice in schools in US. So if it is the market such a big and potential is such high, we can think of tapping this by propagating our idea as more authentic and more effective. Now, one great strength of Arya Samaj, and I will quote from a book written by a former Rashtriya Kavi. His name is Ramdhari Singh Dinkar. उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का टाइटल है संस्कृति के 4 अध्याय, और उन्होंने एक चैप्टर पूरा आर्य समाज पर लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि पश्चिम की आंधी को बुद्धि पूर्वक जवाब देने वाला जो आंदोलन था उसका नाम था आर्य समाज। Because anything which is against intellectual logic or argument, it was not accepted. So our strength is that we have very logical exposition, description of any issue, particularly on moksha, and this is that world, the most important property nowadays is what we call IPR, intellectual property right, and we have, I think many people say that Arya Samaj has got wonderful product, but their marketing is poor. So if the marketing is poor, I think we have to address that, and we have to capitalize on our intellectual property. So I come to the content of this sammulas, and my version will be not a scholar's version. It will be a practitioner or a sadhak's or a learner's perspective. Now, when I addressed on Gita Jayanti, my perspective of Gita was also of a teacher and a student, and I had given an academic perception of my understanding of Gita. Now, I'll talk that as a practitioner or as a sadhak, if I approach this sammulas, तो मैं किस तरह से इस sammulas का अध्ययन करता हूँ, स्टडी करता हूँ, और मेरे लिए इसमें क्या है, और इसको मैं हर आदमी के लिए इसको कैसे इसका उपयोग कर सकता हूँ या इसका दूसरों को मैं कन्विंस कर सकता हूँ. I think Vidyasagar ji is mentioning that we have to engage some marketing experts. Yes, we have to have a synergy with any expert, any consultant, and we have to, when the market is so huge, I think we can afford to engage any expert. If the revenues justify the cost, any cost is acceptable. So I was coming to this, that I have my own understanding of moving through this chapter. So there are 2 aspects. One is philosophical aspect,
And I think for that we have the best person available today as the chair. So he will be dealing with those issues. Though I have gone into that, but I think my meat of the my part will be more little practice oriented. And those issues, if time permits, I can briefly touch later on. But I have many things to share with you, and I am eagerly and excitedly waiting to come to those points one by one. So first thing I'm starting is why mukti? Now the words, like, which are used in the English translation of Evan Satyarth Prakash, like freedom or emancipation. I think no word is really, 100% equivalent of the word mukti. So I'll be using mukti. So why one should go for mukti? So all these shastras say, and even Swami Dayanand at the end quotes the Sankhya Sutra, that दुखों से नितांत निवृत्ति उसके लिए ये मुक्ति का प्रयोजन है. मुक्ति है ताकि you are free from all sufferings. जितने तरह के कष्ट हो सकते हैं, जितने तरह के दुख हो सकते हैं, जितनी तरह की व्याधियां हो सकती हैं, जितनी तरह की आपकी परेशानियां हो सकती हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, environmental, societal, any type of things, the cure is, and not only the cure, not only one-time cure, but all-time cure and conclusively effective cure is the moksha and the sadhana, which takes you to the moksha. So, but if you go that more, if you go with this, though if you go a little deeper, but that is only those people who have already interest on this. When I'm approaching, the masses, I have to tell that it is for the. I say no, I'm already happy. Thank you. I don't need your product. I don't need your lecture. So what? So the thing is that you have to tell it that it is for those people who are happy or who perceive themselves to be in a state of happiness. वो अपने को खुश महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं, या वो कहते हैं नहीं, हमारे पास भगवान की वजह से सब कुछ है, कोई दुख नहीं है और हमारी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है, हमें ये आपका कैप्सूल नहीं चाहिए, आप जो आप लेके आए हो कि सब लोग जो है शास्त्र हमारे कहते हैं कि दुख की निवृत्ति का एक उपाय है और वो आप लेकर के आए हो, हमें नहीं चाहिए. तो मेरा कहना है कि अगर दो लोग सुखी हैं या जो लोग अपने को सुखी महसूस करते हैं, आपके पास उनके लिए रेसिपी होनी चाहिए. तो उनके लिए आपके पास क्या रेसिपी है? आपके पास रेसिपी ये होगी कि आपका जो सुख है उससे बड़ा सुख हम आपको दे सकते हैं. देखिए, the car manufacturing companies in Japan, they make सर्विस कि कार की सीट कैसे होनी चाहिए. और हर आदमी जो बताता है कि मैं जैसे बैठता हूँ वो बिल्कुल सही है और कार की जो सीट है मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से होती चाहिए. Now they train those people कि नो आप ऐसे बैठ के देखिए, इस एंगल पे देखिए, इतना झुक के देखिए, इतना पीछे होके देखिए. And how do you feel now? Yes, much better. So you have to tell them that there are better ways of sitting the way you are used to, and so that may be a better seat than what you are currently using. So आप जिस स्टेट में हैं, जिस आनंद में हैं, जिस सुख की अवस्था में, उससे अच्छे सुख की एक अवस्था है और वो अवस्था है जिसके बाद आपको पाने की कोई तमन्ना कुछ नहीं रहती. This is the last post, the last destination. Beyond that, there is nothing. आपने एक हिंदी के बड़े फेमस और मेरे प्रिय कवि हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद. उनकी एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, जिसके पात्र हैं मनु और श्रद्धा, पहला और आदि पुरुष और आदि नारी. तो उसमें एक बात आई है कि
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं. So this is what, you know, this is the ultimate. After attaining that state, you don't long for anything. आप एक उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद आपको किसी और चीज की कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं. तो वो जो चीज आपको सेल करनी है वो उसका नाम है मोक्ष. और उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आप खुश हैं तो आप इससे बड़ी और खुशी, और ये खुशी नहीं, इसके खुशी के कई कई लेवल्स हैं जो आप अटेन कर सकते हो. और हमें एक देना पड़ेगा कि देखिए आप ये करके देखिए, हाउ डू यू फील नाउ. सो दैट्स वन थिंग. नाउ दूसरा एक सवाल आएगा कि भाई ये मुक्ति कितने लंबी होती है, एक बार मैं मुक्त हो गया तो कितना लंबा है. अब स्वामी जी इसमें लिखते हैं, और इनकी काफ़ी अच्छी रिसर्च है काउंटिंग पे अपने प्रोफेसर आर्य जी की, कि ये है कि 36,000 साइकिल्स कौन सी सृष्टि के, यानी सृष्टि और प्रलय यानी एक अहोरात्र, एक दिन रात. तो एक का जो साइकिल है ये होता है 4,32,000. So 4,32,000 plus 4,32,000 crores is equal to 684. Now 684,000 multiplied by 36,000. Oh, so no, I don't want such a period, such a long period of mukti. भाई क्यों? अरे भाई इतना बड़ा पीरियड बोरिंग नहीं हो जाएगा? So I had also this question कि भाई मुक्ति में इतना लंबा समय है कि आदमी जो मुक्त है आत्मा वो बोर नहीं होती. तो बड़ी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग व्याख्या मुझे मिली. और ये कि जो आनंद है उस अवस्था का है, वो आनंद हमेशा नित्य नवीन आनंद है. उस आनंद में बोरियत नहीं है, उसका उसमें कोई आपको आप उससे थक जाएं ऐसी कोई बात नहीं है. जो लोग थोड़ा सा ध्यान में बैठते हैं और इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हम आज की मेडिटेशन में बैठे तो हमने ईश्वर के साथ बैठे, तो जिस तरह का आनंद हमें कल था, आज उस ध्यान का आनंद अलग है, और कल उसका ध्यान का आनंद अलग होगा. और ईश्वर जो अनंत है, जिसकी सारी शक्तियां अनंत है, जिसका एक गुण आनंद है, सत्य चित्त के बाद आनंद है, उसका आनंद जो है वो नित्य नवीन है. और उस नवीनता को आप पा करके कभी बोर नहीं हो सकते. कभी you never get bored in such a state where you are in a state of bliss which is everlasting and which is always renewing itself. So ईश्वर का ज्ञान अनंत है, ईश्वर का आनंद अनंत है, और ईश्वर के सानिध्य में आपको जो आनंद मिलता है वो भी हमेशा फ्रेश है. जैसे सूरज रोज नया उगता है, हमें बोर नहीं होते, हमें वो पुराना नहीं लगता. तो इसी तरह ईश्वर का रचा हुआ जो आनंद है वो भी बहुत बहुत नवीन है, नित्य नवीन है. और कवि कालिदास ने हिमालय में का वर्णन करते हुए लिखा है, सौंदर्य की परिभाषा दी है कि सौंदर्य वही है. वो कहते हैं हिमालय को देखकर, हिमालय वही है पर आपको रोज देखने का मन करता है. वो कहता है जो नित्य नया होता है वही सौंदर्य की परिभाषा है. तो ईश्वर का आनंद जो है वो नित्य नया है, और वो आनंद सौंदर्य से भरा हुआ है, नूतनता से भरा हुआ है. अब सवाल है कि चलिए बड़ी अच्छी बात है, हाउ टू गेट देयर, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी. तो मुक्ति के साधन क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स. इस मामले में तो आपको क्या, देयर आर गुरुज अनलिमिटेड वर्ल्ड ओवर. आपको हर 10 किलोमीटर पे कोई गुरु मिल जाएगा जो आपको बताएगी आइए मैं आपको मुक्ति दिलाता हूँ. छोटे से छोटे एक सेंटेंस बोलने से आपकी मुक्ति हो सकती है. जैसे कहेंगे भी गंगा को इतने दूर से भी आपने गंगे गंगे कह दिया तो आप मुक्त हो जाएंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे. उनसे लेकर के विपस्सना और कहाँ का कि कितनी तरह की वैरायटी हो सकती है. एंड ऑल द गुरुज दे हैव दिस यू नो कि उनका ये काम कर दिया तो आप मुक्त हो गए. तो इसमें हम उनके पास नहीं जा रहे, हम ऋषि दयानंद के पास आते हैं. तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऋषि दयानंद की कई किताबों में उन्होंने
इसको कई तरह से डिस्क्राइब किया है। आर्यवेश रत्नमाला में इसका जिक्र है, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में है, नवे समोल्लास में तो है ही, और इसके अलावा ऋग्वेद भाष्य भूमिका के उपासना विषय में है, और वेद के भाष्यों में ये कई कई जगह पर काफी इसका वर्णन है। पर हम चूंकि इस समोल्लास की बात कर रहे हैं तो वी विल फोकस ओनली ऑन कि व्हाट आर द steps which have been suggested by Swami Dayananda Saraswati for the mukti. So इसमें जो आप पढ़ेंगे तो पहला विवेक है, दूसरा वैराग्य है, फिर तीसरा सटक संपत्ति है, चौथा मुमुक्षत्व है, उसके बाद दो चीजों का और वर्णन है। नाउ मुमुक्षत्व तक की जो स्टेज है वो एक कैटेगरी है, वो एक कैटेगरी है that these are 4 steps which make you eligible for the मोक्ष मार्ग। विवेक का जो है हमारा जितने जो दर्शन हैं उन सारे दर्शनों का एक ही पर्पज है, दैट इज विवेक। और जब आपकी विवेक ख्याति हो जाती है तो फिर आपका मुक्ति का मार्ग निकट है। तो ये विवेक क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज है, दैट यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन धर्म एंड अधर्म, पाप एंड पुण्य, ग्राह्य एंड त्याज्य, करणीय या न करणीय। सो दिस इज what we call vivek. Now in this vivek, Swamiji has described number of things. उन्होंने जिक्र किया है शरीर का, 3 तरह के शरीर, एक चौथा शरीर जो है तुरीय भी बताया, चौथी अवस्था बताई, 3 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, जागृति, स्वप्न और निद्रा। और चतुर्य का जो संस्कृत में तुरीय हो जाता है, 4th स्टेट है वो तुरीय अवस्था है। और इसके अलावा 5 कोश बताए हैं। अब वो उसका मेन पर्पज है, जैसे मैंने कहा, विवेक का जो है मेन उद्देश्य है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट आपको करना है कि आपका शरीर चाहे वो क्या ग्रॉस है या सटल है या कॉजल है, सूक्ष्म है, स्थूल है, या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, वो आपको या आपकी कोई अवस्था है या आपका कोई भी कोश है, ये सारी चीजें आपका जो सोल है, आपकी आत्मा है, जीवात्मा है, उससे भिन्न है। You have not to mix up the two or anything, yourself with either body of any form, your soul with any of the state, the sleep, the dreaming stage, and the what you call it, the sleep, awake, and dream stage, and the 4th, which is for the samadhi, and the koshas. Now, I'm not going into detail because I don't know how much time I'm left with. Yes, Dr. Sahab, how much time I have? तक बोल सकते हैं, अभी है आपके पास 23 मिनट्स हैं। 23 मिनट्स हैं, ओके। 25 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए टाइम। अच्छा, ठीक है। सो देन फाइन, थैंक यू। सो ये जो स्टेजेस हैं, और इसका मुझे बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन मिला नारायण स्वामी जी के, हमारे जो महात्मा नारायण स्वामी जी थे, जो सार्वदेशिक सभा के प्रधान भी रहे और बहुत त्यागी तपस्वी है। उन्होंने आत्मदर्शन के अलावा मृत्यु और प्रलोक और उपनिषदों पर बहुत बढ़िया व्याख्या लिखी है, इंग्लिश में भी है उनकी। तो वो उनकी आत्मदर्शन जो पुस्तक है, उसके एंड में 4-5 पेजेस में उन्होंने ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया है। उसका मैं एसेंस बता रहा हूँ। उन्होंने रिलेट किया है इन कोशों को और ये अवस्थाओं को, पर मुख्य बात उन्होंने एक चीज लिखी है, वो कि जब आप जागृति से स्वप्न में जाते हो, स्वप्न से निद्रा में जाते हो, तो एक एक चीज छूटती जाती है आपकी। पहले आपकी इंद्रियों का कांटेक्ट बाहर के वर्ल्ड से था जागृत में, फिर जैसे ही वो कांटेक्ट कम हुआ आप स्वप्न में हुए, फिर जो मन का कांटेक्ट यहाँ पर चल रहा था वो भी कम हुआ तो आप निद्रा में आ गए। और जिस जिस स्टेज से आप एक एक चीज छोड़ते हुए आगे बढ़े, वैसे वैसे आपको रिलीफ मिलती गई, यू फील बेटर। आप
जागृत अवस्था में जो जितना कष्ट और दुख दर्द था वो आपको स्वप्न अवस्था में नहीं है, और स्वप्न अवस्था में भी जो आपको था डिस्कम्फर्ट किसी कारण से, वो गाढ़ निद्रा में नहीं। तो आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, एक एक चीज छोड़ते हुए जा रहे हैं। पहले आपने इंद्रियों का साथ छोड़ा, स्वप्न में आए, स्वप्न से आपने मन का साथ छोड़ा, फिर आपने इन सब का साथ छोड़ा, आप नींद में आ गए, गाढ़ नींद में आए। तो आप धीरे धीरे दुख से सुख की ओर जा रहे हैं। इसका एक्सटेंशन उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल किया है कि जब आप एक और अगली स्टेज में चले जाते हो, एक और स्टेज में तो दो तो हो सकते हैं कि वो तुरीय अवस्था वाली एक और हो, पर ये तुरीय अवस्था वाली बात नहीं यहाँ पर कह रहे। वो कह रहे हैं कि जब आप उस अवस्था में जाते हो जब आपका शरीर से ये भी संसर्ग छूट जाता है, तो उसमें दुख नहीं है, दुख वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आपका संयोग कम होते जा रहा है, वैसे वैसे आप आराम की स्थिति में जा रहे हो, आप कष्ट से दूर होते जा रहे हो। जब आपका बिल्कुल शरीर से पूरा वियोग हो जाएगा, उसमें दुख वाली बात नहीं है। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो दूसरी चीजें इनमें है आपकी कि शरीर वाली बात, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो गीता के कई प्रचारक हैं वो एक प्रचार करते हैं और बड़ा एक छोटा सा पंपलेट टाइप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो काफ़ी घरों में आपको मिल सकता है, आजकल तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। उसमें कहते हैं कि क्या तुम गीता सार, और पहला वाक्य उसमें होता है कि तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। यानी आप कुछ नहीं लेके जाओगे जब संसार छोड़ोगे। पर ये हमारा जो शरीर की अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। जब हम संसार छोड़ते हैं तो हमारा एक शरीर यहाँ पर छूटता है और दूसरा और तीसरा शरीर नहीं छूटता है। और दूसरा शरीर जो इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर की गिनती डिपेंड करता है कि आप अंतःकरण में कितने लेते हो, उसके हिसाब से एक दो कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपकी 15 हैं, उसके बाद आप अंतःकरण में बुद्धि, मन, अहंकार, तो इस प्रकार की गिनती करके मतलब ये है आपकी ज्ञानेंद्रियां 5, उनके जो है सूक्ष्म भूत 5, और मन, बुद्धि, अहंकार, और 5 तत्व, इसके 5 प्राण। तो ये जो मतलब जो आपका मुख्य बात क्या है, आपका जो संस्कार का कोश है, इसकी गिनती छोड़ दीजिए, वो आपके साथ चलता है। और जो प्रोफेसर आर्य ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे कई लोगों से बात करने पर चित्त के विषय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि पूरी योग दर्शन चित्त की शुद्धि पर चलता है, और चित्त क्या है इसकी डेफिनेशन ही बड़ी डिबेटेबल हो जाती है। पर जो हमारी ध्यान की एकाग्रता की निरुद्ध अवस्था का सबसे बड़ा बाधक है वो है चित्त की अशुद्धि, चित्त के दोष। और वो जो संस्कार हैं वो हमारा चित्त के पार्ट हैं, क्योंकि चित्त की वृत्तियां जो हैं, चित्त का व्यापार उन्हीं संस्कारों से संचालित होता है। तो वो जो आपके संस्कार हैं वो आपके साथ अगले जन्म में या तब तक साथ रहेंगे जब तक आप मुक्त नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ये विचारना है। मैं पहले जब मैं कई बार इंडिपेंडेंटली सोचता था कि हम इतना कुछ काम करते हैं, लेकिन हमें वो काम करना चाहिए जो इस जन्म के बाद भी हम जिसको साथ ले जा सके। Again, I put a lot of effort in earning and creating physical assets, land, building, and etc. etc. I have got big farmhouses, and many of the big people they own islands in number of countries. So what are they right? So question is कि आप वो काम करें जिससे आप कि जो नेक्स्ट जीवन में आपकी जो संपत्ति आपके साथ चल रही है उसमें एडिशन। सो योर बैलेंस शीट should not have your physical properties, assets. Your balance sheet should have
that how clean you could make your chitta, and if there were impurities, how successfully, to what extent you have removed those ashuddhis. And this is the task you will be doing not in this birth, but in n number of births, till you really erase, or you do Dagda Beach, all the sanskaras, so that they don't interrupt when you are in unison with Almighty Om in Niruddhavastha. So that understanding of body is very important. And a whole, the understanding, the one purpose of that, all this, is that you can discriminate between yourself and all this. And after a description of this, Swamiji very clearly mentions that you should visualize the antakaran. Man, buddhi, chitta ko aap sakshat kare, ye avastha hai, aap विवेक का all purposes जो आपको different चीजें कही गई हैं, उसमें आप इनका विवेक का माने discrimination कर सको, it is that purpose. Vairagya is, and the one thing is that he is very emphatically saying that satya का ज्ञान and vairagya is satya का आचार. So satya is that you discriminate between what it is to what it is not, and achar is that you act on what you have arrived as satya gyan. And in that process, so you move on to shatak sampati and then mumukshutva. Now shatak sampati is some sort of tapascharya, and where you have six of your assets. These are the real assets. There is a sam, dam, uprati, titiksha, shraddha, and samadhan. Now, these are very essential now to acquire the eligibility to be a mokshamargi. And these are very common. Sham is, and dam, the difference is both you are withdrawing from evil and directing towards good. Two parts, when it is internal, it is the antakaran, then it is sam. If it is the indriyas, if you regulate them, then it is called dam. Dam is daman, sham is for the antakaran, the internal organs, like man, buddhi, chitta, ahankar. And then uprati is withdrawal from the people who are not with your wavelength. You know, you feel uncomfortable. You know, their sanskars, their wavelength, they vibrate very differently. I had one experience of this, very strange. I was working as a professor at Railway Staff College. And there was one gentleman who had gone to US for education, and there he came in contact with some Christian missionaries, and he became Christian, and he was earlier Mudgil, and he became Modgil. He was professor of OB, organizational behavior. So when he used to walk in my chamber, I don't know, he will not even speak, but I'll feel uncomfortable. And he was, when he will meet, he will hug you with, wide arms, as if you are a great friend. Even if, once he met me on his station, so he hugged me and, oh, Dr. Sharma, how are you? And I always used to feel very uncomfortable whenever he used to come to me. Later on, I realized, and he was a CIA agent, and he was thrown out. And we learned that, he was, using his position for illegal purposes. And it may be. So, there are people you can sense with whom you can go well, right, emotionally. So you have to withdraw from those set of people who are wicked in nature, whose wavelength doesn't match with you. And that's what I call uprati. Titiksha is you remain committed to your path of what? Learning truth and acting on that, come what may. So you overcome all the obstacles, you stick on to your Satya Marg, you don't deviate from that. Perhaps you may recall what
Swamiji has quoted from Vritrahari. Nindanti nipuna yadivastantu Lakshmi gachati yugantareva na mrityu. I'll give you the gist of that. It says whether the learned people praise you or they don't, whether the wealth comes to you or not. So don't care for the name or the wealth, and then say mrityu, the death, whether it is coming today or after ages. Nyayat patha pravichalanti nadhira. The dhiras, those people who are the mokshamargis, they don't deviate from their path of nyaya. And the nyaya is what? One which is decided by ascertaining the truth and sticking to it, come what may. So it is that which is mentioned by Titiksha. And Shraddha is beautiful. And if you read the Swami's each word, it says Purna Vidwan. Now, we have a lot of people, we are not even half Vidwan. They speak Kachra, they tell something which they don't understand. So it should be Purna Vidwan, and their words you should trust. And Shraddha, by our meaning is that when you have dharana in Satya, then it is Shraddha. Blindly saying what? That Guru Vachan Brahma Vakya, that is not Shraddha. You can't have Shraddha without having a content, 100% content of truth. If it is mixed and you are acting on that, you are not Shraddhalu, you are making mockery of Shraddha, you are Ashraddhalu and not eligible to tread the path of moksha. And the samadhan is concentration, ekagrata. And ekagrata is a beautiful virtue. I think you can make hundreds of training programs for different levels, right from kids to the middle, the students of say primary, secondary, college, universities, and the concentration is such a beautiful thing to have, because and whole of the Siv Sankalp Sukta, it gives you keys when many things you can develop, and you can unlock unlimited power of mind by this key of ekagrata. And I think that's a tremendous potential in working on samadhan by ekagrata. And I have requested, I have heard the Vidyarthiji when he was delivering talk on the program organized by Arya Samaj of Nepal, Kathmandu. And I was in California. I heard his speech, and he had given, he talked about avdhan. Avdhan is that savdhan, attention. And his discourse was so beautiful. I immediately contacted him and said that you have to write a book for this only for the children, how we can develop this capability, this potentiality which is hidden in dhyan, in concentration. And I think he is working, but because of his ill health, he's not progressing well. I also told him, don't worry about all that. You should not get tense because of the target which I had just given to him. But he will be writing someday. But this is a potential area where a lot of work, a lot of research can be done. And I think it is untapped area. And the fourth is mumukshatva. Now, mumukshata is what? Intense desire. And the intense desire, Swamiji describes that a hungry person desires only for food. A thirsty person desires only for water, nothing else. And so if you make a person drown in water, what he will wish for? He just wants to come out and have oxygen. So it is that intense desire which is mukshatva. And after that, he talks about another area which has a tremendous amount of potential for research, and that is, he talks about being a Trigunatit. And that may be one, there are three gunas, I need not elaborate.
you have to move from, this is described in Yoga Darshan. It is Prakash, Kriya, and Sthiti. That is, Prakash is for Sattva, Kriya is for Rajas, and Sthiti is for Tamas. So, it says that you have to move from one to the other, and then you reach the Sattva, which is the Satya Adi Gun, which describes Shanti, Pavitrata, Adi. And you have to, and lastly, it describes that you have to go even beyond that Satya Gun, and you have to attain the final stage, that is Nirodhavastha, in unison with Paramatma, and that is the status when you are in your own form, your own Swarup, and in unison with God, you are in the situation of getting the moksha. I was mentioning this. I had also once discussed with some professor of psychology in Delhi University that in management, we have the theory of motivation by Rensis, there's Maslow and a lot of other theories where all the people are treated alike. And let's say, there's a hierarchy model, and so many psychologists have developed model on how you can incentivize people, how you can motivate people, what sort of schemes will work. They don't categorize people. Basically, they're different in terms of the gunas. A theory, a motivation incentive scheme, which is fit for a tamasic person, will be absolutely, not work for a person who is basically a sattvic person. Similarly, a rajasic person will require perhaps a different set of incentives so that he gets motivated. So that's area of research for the psychologists and the management experts. And after that, Swamiji mentions in the after the gunas, a state of which is from the Yoga Darshan 233. That is how the yogi should keep his chitta prasad, his happy. And there are that you have to deal with people who come across with these approaches so that your chitta will remain calm and undisturbed. उसमें उद्वेग नहीं होगा, उसमें उत्तेजना नहीं होगी. अगर आप पुण्यों के साथ आप मुदित होगे, जो संपन्न हैं उनके साथ मैत्री का भाव रखोगे, जो दुष्ट हैं उनके साथ उदासीनता का भाव रखोगे, राइट, डिस्टेंस मेंटेन करोगे, और जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा, सहानुभूति, एम्पैथी रखोगे. अगर आपकी ये चार चीजें लोगों से, दुनिया के सारे जो लोग हैं उनको आप इन 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, और ये आपके पास 4 स्ट्रेटेजी होंगी that you will deal with these people with this sort of approaches, and that will keep you on the track of yoga and it will not disturb you. Anyway, I think I have now another issue, another bullet point, where to start. कहाँ से मैं शुरू करूँ अपनी मोक्ष की यात्रा? तो बहुत सारी चीजें हैं. योग दर्शन में तीन तरह के लोगों के लिए 3 तरह के स्टार्टिंग पॉइंट है. जो उत्तम लोग हैं उनके लिए तो 3 पहले के योग अनुशासन तो छोड़ ही दीजिए, और उसका जो है चित्तवृत्ति निरोध है, और तीसरा उसके विपरीत क्या होती है, तद दृष्टि स्वरूप सवन, वो जो अदर स्थिति छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो उन्होंने हाँ जी, हाँ, इतरत्र, हाँ, जो दूसरा है, अगर आप इसमें नहीं होगे तो वृत्तियों के साथ आप अनुरूपता हो जाएगी. वृत्ति क्या है? व्यापार है. इट इज द बिजनेस ऑफ चित्त. वो किस तरह के हैं? वो 5 तरह की वृत्तियां गिना दी, और 5 तरह की वृत्तियों के बाद अगर आपने ये समझ लिया तो आपको और किसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं. दूसरी कैटेगरी के जो मीडियम वाले हैं उनके लिए क्रिया योग शुरू किया है, वो आपने अविद्या से शुरू किया. स्वामी जी ने भी पहला जो चीज दिया है वो अविद्या से शुरू की है. तो क्या वो हम वहां से शुरू करें, क्रिया योग से शुरू करें? माने क्रिया योग के 3 पार्ट हैं, क्या तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तो क्या मैं वहां से शुरू करूं? और तीसरा जो है, हाँ, जो पतंजलि का जो तीसरा है, जो सबके लिए, आम आदमियों के लिए, वो शुरू होती है क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरे जो है यमों से और नियमों से, और फिर सारे 8 अंगों से. तो मैं कहाँ से शुरू करूं? इसका
जवाब प्रोफेसर आर्य ने एक अपने सेशन में दे दिया है, मैं वहाँ पर आऊँगा। पर इससे पहले मैंने मेरी एक उत्सुकता थी, मैंने कुछ विद्वानों से भी बात करी, तो उत्तर बड़ा अच्छा है। उत्तर यह है कि आपको शुरुआत करनी है यम नियम से ही, और ध्यान में बैठ करके ये नहीं सोचना है कि मैंने में अहिंसा है कि नहीं है, मैं सत्य का आचरण कर रहा हूं कि नहीं, मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूं, मेरे में संग्रह की प्रवृत्ति भयंकर है कि नहीं है, मैं ब्रह्मचर्य की दृष्टि से ना, ये ब्रह्मचर्य बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। ब्रह्मचर्य जो है वो सिर्फ रेगुलेटिंग वन ऑर्गन पर केंद्रित नहीं है, इट इज संयम। एंड स्वामी श्रद्धानंद जी ने इतने कड़े शब्दों में गृहस्थियों को लताड़ा है कि गृहस्थियों, क्या तुम ब्रह्मचारी हो, या सिर्फ ब्रह्मचारी सिर्फ जो अनमैरिड है उन्हीं के लिए? वो कहते नहीं, आपके लिए उनसे ज्यादा जरूरी है। तो जो संयम है और वो हर अवस्था में और हर आश्रम के लिए है, वो इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये आपको ध्यान में बैठ करके सोचने की नहीं, ये शुरुआत नहीं है। व्यवहार से आपका दिन भर का 8 घंटे का 10 घंटे का जो व्यवहार हुआ है इससे पहले, या आप करने वाले हो, अगर सुबह आप ध्यान में बैठे हो, तो क्या आप इन चीजों का पालन अपने व्यवहार में कर रहे हो? तो आंसर इज दैट यू हैव टू स्टार्ट विद यम एंड नियम, योगांग, but in your daily routine life, not in while you are in state of meditation कि मैं 2 घंटे तक ध्यान में बैठूंगा। ठीक है, आप 5 घंटे ध्यान में बैठ लो, आप 8 घंटे की समाधि लगा लो, अगर आपने व्यवहार में इनका आचरण नहीं किया, आप कभी ध्यान की आप निरुद्ध अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते, ये गारंटी। चलिए मैं और विषय पे आता हूं, ये हमने क्लियर कर लिया। और हाँ, अब यह है कि स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, और वो लिखी हैं कि ये जो हमारा कर्मकांड है, वो कर्मकांड हमारा पूरा कर्मकांड 2 है। मैं आपको एक, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, स्वामी जी की सारी किताबों का, सबका तो नहीं है, ऋग्वेद का जो भाष्य है वो इसमें नहीं है, पर बाकी ग्रंथों का जो चीजें इस टॉपिक पर आई हैं, वो सबका कंपाइलेशन एक गुरुकुल कांगड़ी के पहले के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश शास्त्री, उन्होंने दयानंद संदर्भ ग्रंथ में उनके सारी टॉपिक वाइज उन्होंने कलेक्शन किया है, कंपाइल किया है। तो मैं उससे पढ़ रहा हूँ कि कर्मकांड के जो 2 विषय हैं, और वो है निष्काम और सकाम। और इसमें कहते हैं जो काम मुख्य जो है, वह काम तो अनेक प्रकार का है, परंतु उसके 2 भेद मुख्य हैं, एक परमार्थ, दूसरा लोक व्यवहार। अर्थात पहले परमार्थ और दूसरे से लोक व्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परम पुरुषार्थ रूप कहा, ये वेद विषय विचार नामक जो स्वामी जी का ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ तो नहीं कहा जाएगा पर उनकी पुस्तक है, उस हाँ, ये नहीं, ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का भाग है वेद विषय विचार से। मैं ये वहां से ये कोट कर रहा हूं कि प्रथम जो परम पुरुषार्थ रूप कहा, उसने परमेश्वर की स्तुति अर्थात उसके सर्वशक्तिमत्व आदि गुणों का कीर्तन, उपदेश, श्रवण करना, प्रार्थना अर्थात जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करनी, उपासना अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्य भाषण आदि आज्ञा का यथावत पालन करना। उपासना वेद और पातंजल योग शास्त्र की रीति से ही करनी चाहिए, तथा धर्म का स्वरूप न्यायाचरण है, और न्यायाचरण उसको कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार के सत्य का ग्रहण और असत्य का प्रत्याग करना। इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत करना है, सो ही कर्मकांड का प्रधान भाग है। और दूसरा यह है कि जिसे अर्थ, काम और उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं 2 पार्ट हैं, एक तो आप जो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हो, एक, और ये जो पर इन दोनों में से जो है, दोनों में से मुख्य कौन है? जो पहले वाला भाग है, ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं। सो इस भेद को इस प्रकार जानना कि जब मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट के केवल परमात्मा की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत करना, यही निष्काम मार्ग कहलाता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती। इसी कारण से इसका फल अक्षय है, मतलब ये आपको फल अवश्य मिलेगा। और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किए जाते हैं,
उसको सकाम कहते हैं। इस हेतु इसका फल नाशवान होता है, क्योंकि सब कर्म करके इंद्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता। तो ये जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मोक्ष की कामना करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। वी हैव टू रीडिफाइन आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर लाइफ गोल्स। आवर फर्स्ट लाइफ गोल, our meaning of life is to strive towards moksha, not strive towards a great career, and earn a lot of wealth, a lot of name, a lot of fame, or a lot of satisfaction worldly. But the first and foremost, the prime objective which defines the meaning of life is to strive for moksha and to treat the path of mukti. So ये अगर जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आगे क्या होता है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और मैं स्वामी जी को एक कोट करूंगा कि जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है उसकी बात सुनिए, बड़े आपको अच्छा लगेगा। और ये मैं आपको सुना रहा हूँ। आई एम कोटिंग फ्रॉम सत्य धर्म विचार, स्वामी जी के जो लिखा हुआ है। और उसमें देखिए कह रहे हैं, जैसे जब कोई छोटा बालक घर के ऊपर से अपने माता पिता के पास नीचे आना चाहता है या नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता है, तब हजारों आवश्यकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने से उसको दुख होगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चों को सदा सुख रखने की इच्छा और पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं, वैसे ही परम कृपा निधि परमेश्वर की ओर जब कोई सच्चे आत्मा के भाव से चलता है, नाउ आप इसको अंडरलाइन समझिए, तब वह अनंत शक्ति रूप हाथों से उस जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिए रखता है, फिर उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होने देता है और वह सदा आनंद में रहता है। नाउ दिस इज अल्टीमेट, दिस इज कृत्यता। जीवन की धन्यता ऐसी में है कि आप इसके पात्र हो सको कि जैसे माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकती, वैसे ही परमपिता परमात्मा आपको दुख में, कष्ट में, तकलीफ में देख नहीं सकता। और मैंने एक योग शिविर अटेंड किया था रोजड़ में, बहुत पहले की बात है। तो मुझे वहाँ एक किसी ने सुनाया था, उसकी पंक्ति मुझे कुछ याद आ रही है कि माँ तो तैयार है दूध देने को, एक तू है कि रो नहीं सकता। माँ तो तैयार है दूध देने को, एक तू है कि रो नहीं सकता। तेरा उसका दीदार हो नहीं सकता, गर तू अपने को खो नहीं सकता। अपने को अहंकार मिटा करके ईश्वर को एकमात्र लक्ष्य करके उसी के ध्यान में मग्न हो करके उसी को परम ध्येय, अल्टीमेट गोल समझ करके जब आप इस योग यात्रा पे चलोगे तो वह अनुग्रह करता है। आप ईश्वर प्रणिधान की जो व्यास की व्याख्या के है वो पढ़ोगे कि ईश्वर अपने अनुग्रह से आपको युक्त करता है। और स्वामी दयानंद के बहुत सारे मैंने यजुर्वेद के मंत्रों में ये भाष्य पढ़ा है कि ईश्वर जो जब आप इस ध्यान करते हो तो ईश्वर अपना अनुग्रह करके अपने आनंद में ले लेते हैं। तो यही पात्रता प्राप्त करना, ये किस में होगी? वही चित्त की शुद्धि, और सारा योग दर्शन वही चित्त शुद्धि में। आपका सारा प्रयास उसी चित्त शुद्धि के लिए है। तो अब मैं एक लास्ट पॉइंट करना चाहता हूँ, वो है कि स्वामी जी ने वार्न किया है कि परमेश्वर की भिन्न की उपासना से आप कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। और वो जो अगर भिन्न की उपासना है, भिन्न माने जड़ या प्रकृति की जो उपासना है, वो पाप और दुख का हेतु है। और पाप और क्लेश नहीं दूर हो सकते क्योंकि ये अविहित कर्म है, ये वेदों में इसकी। तो मैं ये यजुर्वेद का एक मंत्र है और उसका जो भाष्य स्वामी जी ने किया है उसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। ये यजुर्वेद के 3 अध्याय का 60वां मंत्र है। उसके भाष्य में स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन न करें, क्योंकि वेद से अविहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट है ऋषि का कि चेतन ब्रह्म वही उपास्य है
और उसी की उपासना करनी होगी। और अगर आप उसका भाष्य पढ़ेंगे स्वामी जी का, जहाँ वो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि अगर तुम जड़ की उपासना करोगे तो दुख सागर में डूबते रहोगे। तो ये क्लियर मैंडेट है कि उपासना चेतन ब्रह्म की, एक परमेश्वर की ही करनी है, अन्य किसी की नहीं। तो अब मैं अपने आखिरी पोर्शन पे आता हूँ, जिसमें मुझे अपने दिल की बात आपसे करनी है। और वो दिल की बात ये है कि हमारा ये जो इसका मैसेज है वो बड़ा जेल करता है। जो संदेश वेद दे रहे हैं, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, विश्व के जो सारे जो अमृत पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, उनके लिए हम यही संदेश दे सकते हैं कि आपका लक्ष्य मोक्ष है और आपको लक्ष्य की तरफ इस रास्ते में बढ़ना है। मैं दो चीज़ें अपनी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग हम सारे जुड़े हुए हैं और आर्य समाज से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऋषि दयानंद का प्रसार सब जगह हो, तो एक तो मैं सोचता हूँ कि ये first thing, that if we think that we can do any प्रचार activity locally, I think it is criminal. Criminal in the sense कि देखिए crime जो होता है तो one party, there are two parties, one party is a state. Why state is one party? Because it is crime against society. And I'm saying that if we are limiting the prachar of Rishi Dayanand's work to a limited area, we are criminal in the sense that we are preventing the society from gaining from that knowledge. And it is, I think, the society is harmed by our limited vision of prachar doing locally. So any prachar activity has to be global, and it has to aim at a very, very wide audience. And the activity like this is the example of that type of activity, that type of approach. And the other thing is that don't expect that people will come to you. They will come to Arya Samaj and attend the weekly satsang, and you will do a lecture, a discourse by some Vidwan, and they will go away with the whatever he says. No. Now you can reach their home. You have to reach there, where you can, talk in their comfort zone. So with technology, you have to change your approach. I can reach, I will, I teach, some children every day from here, and they all are in, different parts of states. So it is not, it is unfair that you expect people that we measure effectiveness of our prachar with number of people who are attending our weekly satsang or our Varsik Utsav. I think we have to change our mindset. And there is a mantra. The meaning of that is that the world is like a river. That river is full of stones, and there is a current, and we have to cross it. And the way suggested by Ved mantra is that hold on to the hands of each other, and you will be able to cross it. So the message is that we have to have the Sangachadvam, Sambodadvam, Sambomanansi Jantam, Deva Bhagam Yatha Purve, Samjanana Upaste. We have to walk together, and we have to talk together, and we have to walk our talk together. And that is, I think, our purpose of having chair like this at MDU. The number of activities are planned. I think Professor Arya will tell you that this is just beginning. A workshop is just one. There are other activities. He has already announced, one activity to be held on July 20th, where we will deliberate, and we have invited research papers on how Satyarth Prakash can be taken to the curriculum of colleges and universities, and how it may be how more of research. Now, the Claudia who had made presentation on yoga, there was one slide which was showing there's a surge in the research papers on yoga after some time period. Now we want to see that there is a surge on research on Veda, on the issues raised by Swami Dayananda Saraswati in his works, and we have to make it so popular for research and for academic debate, very rich academic debate globally.
And so we have to plan for many activities, and we can have, all the partner countries, we can have, discussion, open deliberations, how, we can bring the Arya Samaj, the Veda, the Rishikrit Granthas in the central stage and at a high academic level with very quality content. So we may have, I think, Satyarth Prakash competition, and that I think Professor Arya will consider and announce. But I want to close with two small verses. One is my purpose of telling you all that is there's a lot of untruth which is selling in the market in the name of upasana, moksha, yoga, and the people of they are always the people who are taking the right course of truth. They are opposed. There are conspiracies. There are Satyarth against them, and history is full of evidences for that. So for sure, I'm fully convinced, and I want to spend a lot of my time and resources for the cause of spreading the truth, and which is the only mantra for which Swamiji, had dedicated whole his life. He was a researcher of truth. He found the truth, and he died for the cause of truth. So if we can propagate, if we are truly interested in repaying a little bit of debt of Rishi Dayanand, we have to make sure that the world agrees to this, that इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मैं अकेला दिया वेद, अकेला दिया ऋषि दयानंद आर्य समाज, मैं अकेला ही दिया हूँ इस सदन में. The southern is the globe, the global stage. मैं अकेला ही दिया हूँ इस सदन में, मत बुझाओ, don't put it off, don't weaken the light. इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी. So this is the source, because nobody talks about, Rishi has mentioned what is truth first, and then he say that, come, let's examine what is truth and what is not truth. And he has examined. I think it is the first time in the history anybody has dared to make such a deep and a passionate analysis of truth and countering truth, everything which is untruth, absolutely objectively. I think it's a remarkable piece of work, but it has not been recognized. Professor Arya has organized a talk by somebody, very scholarly person, where say that Arya Samaj stands for a civilization, and there is another civilization, and there are two currents which are fighting with each other. And we have to establish that Satya Sanatan Dharma current overpowers the other one. And that's why what Arya Samaj says, what Rishi says, and what these so many Granthas says, I think that Upanishad words summarily says is beautifully what? Satyameva Jayate. Now, I think we can't, this is the mantra of Rishi, that he wanted to see that Satya prevails. But if he comes today, I think he'll be a very unhappy person, because having given such a masterpiece like Satyarth Prakash and Vedabhashya, we the followers, we the disciples of Rishi, have not done justice to his work. And I think this is the time that we think seriously and dedicate ourselves to justify his sacrifice for truth. And so this message we should take to all the people who are like-minded, and let's come on a common platform. This Professor Arya is very competent to lead us and organize things which have international repercussions, international recognition, and it becomes an international movement. I'm firm that our next strategy will be through the classes, the classrooms, the knowledge, and we have to create the knowledge, and we have to disseminate the knowledge, and we have to establish the knowledge that the truth will never get defeated.
दे में भी कहते हैं अंधेर हो सकती है, नहीं देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती. द डार्कनेस हैज टू गिव वे टू द लाइट. सूरज के पास कितना ही बादल घने हो पर सूरज की चमक को बहुत देर तक वो आच्छादित नहीं रह सकते. वेद का सूर्य, आर्य समाज का सूर्य पूरे विश्व में प्रकाशित हो, दीप्यमान हो, ये मेरी कामना है. और आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस यज्ञ में जितना सामर्थ्य हो, जिस प्रकार के हविष दे सकते हो वो आप जरूर दें और हम होंगे कामयाब एक दिन. और वेद का जो दीप है हम सब के प्रयास से जलता रहेगा, ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा उजाले से, ज़्यादा धरती के क्षेत्र को प्रकाशित करने की क्षमता के साथ. मैं इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं. मैंने अपने दिल की बात कही और प्रोफेसर रवि आर्य जी ने मुझे समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं. और देश और विदेश के जितने भी लोग सुन रहे हैं और उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. नमस्ते, पुनः धन्यवाद. Thank you, Professor Anand Sharma ji. You have given a very illuminating lecture based upon your experiences. You shared your experiences with what Swami Dayanand had said, and it was very, I think, productive, and it is also going to draw a future line of action, what you have talked about. And certainly, I think we will get a new light from this lecture, and just to make a future plan of our actions, and we will certainly proceed in that direction. So now this session is going to end, and I'm going to thank again to Professor Anand Sharma ji